आपके हिसाब से क्या कोई ऐसे सेट रूल्स है जो अगर अगर हम लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखें, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करें, कोई ऐसे सेट रूल्स है जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए, और कभी भी ऐसे अ, अगर सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे मार्केट से निकलने से बेटर है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक करके रख सकें और आप धीरे धीरे मार्केट में रिटर्न जो है वो ले सकें। स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट इज क्रिटिकल इन इन्वेस्टिंग। मैं हमेशा ये बोल बोल के थक जाता हूँ और कोई बात सुनता नहीं, ना ही कोई इंप्लीमेंट करता है, कि आपको कोई भी पोजीशन 25% से ऊपर लॉस दे रहा हो तो आपको उस पोजीशन में रहने का कोई मीनिंग नहीं है। तो लोग लाके देंगे एग्जांपल कि साहब वो 25% नीचे गया और उसके बाद वहां से डबल ट्रिपल हो गया। बेशक होगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ऐसे कंपनियां आएंगी, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वो डबल ट्रिपल होगा। ओके, so therefore I am prepared to be exited in large part from a position at a 25-30% loss, because I do not want a 70% loss in my portfolio. And I'm prepared to rebuy the same stock if the numbers change, the performance comes through, quarterly numbers are good. I'm happy to buy it even 50% higher. For me, उसके बाद वो एक नया ट्रेड बन जाता है। मैं पुराना ट्रेड अपने दिमाग से निकाल देता हूँ। It's become a history. I'm not interested in knowing at what price I bought it, at what price I sold it. On a new, all things being equal basis, if the stock looks good and the price is 50% higher, so be it. Using this approach, I have found that by and large, I remain in the winning side of the market. And this brings me to the second rule. Second rule that you must have. So first is good risk management. Number one, very critical. एंड ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट में एक प्राइस का होता है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इन माय ओपिनियन यू शुड नेवर हैव मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन अ सिंगल स्टॉक। इट इज नॉट वाइज। यू नो, वी कैन ऑलवेज से ही एट 50% और वॉरेन बफेट ने एप्पल खरीद लिया 50%, वो सब आपके लिए नहीं है। वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जहां बड़ा पोजीशन लेके आप पैसा बना सकते हो। 99% लोग बड़े पोजीशन लेके फिर बर्बाद भी होते हैं। Got it? So let's not mix up things here by bringing some odd example that XYZ bought 100% of his, put 100% of his money in a single stock and he became very rich. That is a rarity. That's simply a survivor, telling the story. But 99% of the people will die using that strategy. So, एक 4-5% के ऊपर concentration नहीं होना चाहिए, risk management होना चाहिए. And the third very important thing is that you should be with the market. When I say this, be with the market means आपको उन्हीं क्षेत्रों में रहना है, उन्हीं एरियाज में रहना है जहां पर मार्केट को मोहब्बत है। तो एक मेरा ये मानना है, नथिंग इज परमानेंट इन इन्वेस्टिंग। तो लोग कहते हैं ना मैं 25 साल तक होल्ड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ऐसा कहता हूं सब बकवास है साहब। As long as numbers come through, I'm prepared to hold it. As long as the stock price continues to perform, I'm prepared to hold it. But if stock prices stop performing for that stock or for that sector, I'm not going to be in that trade. And by that, what I mean is a very good example being all the banks, private sector banks in India, which Kotak Bank is a great bank and so is HDFC Bank, and they have given phenomenal returns over a long period of time. Lekin ek time aaya jab they flatlined. For the last, I think, 2-3 years, the returns have been very, very low. उस पीरियड में many other sectors have given blowout returns, while if you are invested in private sector banks, your returns are very poor. So that is what I define as investing. I want to remain on the right side of the market. I don't want to be playing a game in which market is against me. I never do that. I never face the market. मैं market के साथ चलता हूँ, market के विपरीत नहीं चलता हूँ. So that is my first rule in terms of my strategy. Others are risk management strategies. But investing strategy में I like to be with the market. But इसमें एक exception है. This is for 80% of my portfolio. 20% I am prepared to take an opposite view from the market. So market doesn't like a sector, but I am seeing, or a stock, and I'm seeing something very different from what the market is seeing. I will take a bet there, but that will be limited to only 20% of my overall exposure. It will not be 80% of my exposure. 80% will be in what the market likes. 20% or around that will be in what the market does not like.
सो अगेन ये एक बैलेंस का गेम है. इट्स नॉट ऑल और नथिंग. इट्स नॉट दैट सारे के सारे मैं डाल दूंगा जहां मार्केट को मोहब्बत है, सारे के सारे डाल दूंगा जो मार्केट जहां पर उसको अनलव्ड ट्रेड कह रहा हो. I will balance it out, but 80% of the time, 80% of my portfolio will always be in stocks that are moving well. Market is liking them, market is rewarding them, and 20% only will be in the opposite side of the seesaw. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.